Hello मेरे छोटे भाई बहनों. In the last lecture and in the previous lectures we had done basics of accounting, accounting equation and journal entries, and we understand ledger. What is ledger? Ledger जनरल एंट्री जो अपन रिकॉर्ड करते हैं उसे अपन लेजर बनाते हैं, क्लासिफाई करते हैं. जैसे कि परचेज को परचेज में रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स को सेल्स में रिकॉर्ड करते हैं, एंड जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनका एक सेपरेट अकाउंट बनाकर अपन लेजर्स प्रिपेयर करते हैं. इट इज नोन एज प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट. इसमें अपन सेपरेटली अकाउंट्स बनाते हैं और जनरल से लेजर में जो अपन ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उसे अपन पोस्टिंग बोलते हैं. तो सेपरेट अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट जो अपन क्रिएट करते हैं लाइक एक्सपेंस, इनकम, लॉस, ये नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं. इनको अपन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट कर लेते हैं. इसको याद रखिएगा बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिस इज आवर फॉर्मेट. वी अंडरस्टैंड व्हाट इज कैरिड डाउन एंड व्हाट इज ब्रॉक डाउन. कैरिड डाउन मतलब जो बैलेंस इस साल बच जाएगा उसे अपन कैरिड डाउन बोलते हैं, और इसको अपन कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं अगले साल के लिए, और ये क्लोजिंग बैलेंस होता है करंट पीरियड के लिए. इट्स कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं अपन अगले साल के लिए और क्लोजिंग बैलेंस रहता है. और लाइक मेरे पास कैश बच गया 5,000 रुपीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. आई 31st मार्च को मेरे पास 5,000 कैश है अकाउंट्स में. सो जो ये 5,000 है वो मैं अगले साल मतलब 1 अप्रैल को ब्रॉक डाउन करके लिख लूंगा, और ये जो 5,000 है वो मेरा इस पीरियड के लिए क्लोजिंग बैलेंस है और नेक्स्ट पीरियड के लिए मेरा ओपनिंग बैलेंस है. अंडरस्टैंड? ब्रॉक डाउन बैलेंस दैट इज कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, और इट्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट. सो इट्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन. स्टेशनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है इस क्वेश्चन में. सो फर्स्ट वी नाउ इन्वेंट्री अकाउंट. इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी 480 रुपीज. परचेज ऑफ स्टेशनरी बाय चेक, अपन ने कैश दिया और स्टेशनरी परचेज करी. एंड परचेज ऑफ स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम 5-star स्टेशनरी. सो इन्वेंट्री अकाउंट, डेबिट क्रेडिट. फर्स्ट एंट्री इन्वेंट्री अकाउंट ऑफ स्टेशनरी. अपन को फर्स्ट जैन पे अपने पास इन्वेंट्री है, टू बैलेंस पीटी करके लिखेंगे अपन 480 रुपीज. देन परचेज ऑफ स्टेशनरी बाय चेक, परचेज करी अपन ने स्टेशनरी चेक से. तो जनवरी 5 टू बैंक अकाउंट. इन लेजर्स अपन जिस चीज का लेजर प्रिपेयर करते हैं, लाइक अपन स्टेशनरी का लेजर प्रिपेयर कर रहे हैं इस क्वेश्चन में. सो इसके लेजर में अपन स्टेशनरी वर्ड यूज नहीं करेंगे. अंडरस्टैंड? नॉट यूज, बिकॉज अपन लेजर ही स्टेशनरी का प्रिपेयर कर रहे हैं. सो व्हाई वी यूज stationery in ledger. Understand? So I purchase by check, so I write here to bank account 800 rupees. And purchase of stationery on credit from 5-star. Purchase किया तो मैं नाम लिख दिया मैंने जिस अपन ने परचेज किया, तो 1280 रुपीज. एंड इसका टोटल होगा 2560 रुपीज. और ये अपन ने क्रेडिट साइड ट्रांसफर करके अपने अकाउंट क्लोज कर दिया. नाउ सॉल्व अ क्वेश्चन. आई प्रिपेयर हियर लेजर्स ऑफ सम अकाउंट्स. सो नाउ कैश अकाउंट. फर्स्ट कैश अकाउंट, then inventory building. First read a question first.
Prepare the ledger accounts on the basis of following transaction in the books of a trader. मेरे पास डेबिट बैलेंस है एज ऑन January 1st 2022. कैश इन हैंड 8,000, कैश एट बैंक 25,000, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स है 20,000, बिल्डिंग है 10,000 रुपए की, ट्रेड रिसीवेबल्स है विजय से हैं 2,000 एंड मधु से हैं 2,000. सो ये मेरे पास हो गए डेबिट बैलेंसेस. नाउ क्रेडिट बैलेंसेस. मेरे पास ट्रेड पेबल्स हैं क्रेडिट बैलेंस में. आनंद से 5,000 रुपये देना है अपन को और कपिल को 7,000 रुपये देना है. तो दे आर क्रेडिटर्स एंड वी हैव कैपिटल ऑफ 55,000. So first transaction we have is purchase goods worth 5,000 payable at later date for cash less 20% trade discount and 5% cash discount. So this is line 1 for cash. Purchase goods worth 5,000 for cash less 20% trade discount and 5% cash discount. So ये भी अपन समझेंगे. Received 980 from Vijay and allowed him 20 as a discount. Okay. Purchase plant from Mukesh for 5,000. Paid 100 as cartage, मतलब carriage और transportation. It's a transportation cost. ऐसा होता है ना कि अपन कुछ ऑर्डर करते हैं अमेजोन पे और वो कुछ फी चार्ज करते हैं सम लिमिट 499 से. अगर आपका कम का ऑर्डर है तो दे चार्ज सम 40 to 80 rupees फॉर डिलीवरी. सो इट इज कार्टेज मीन्स डिलीवरी चार्जेस टू द शॉप और ऑफिस ऑफ द परचेसर. अंडरस्टैंड. and another 200 as installation charges. ओके ठीक है भाई. मशीन आ गई और इसको लगाने के 200 रुपये से अलग चार्ज दिया अपन ने. ठीक है. सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट 600 रुपीज. ठीक है. रहीम बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड पे ओनली 50% a rupee. It is a case of bad debts. I will tell you what is bad debts. Sold goods to Ram for cash 1,000 rupees. So let's record these debit and credit balances in ledger. So cash account एंड बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट को मैंने दोनों को साथ में बना दिया है. सो कैश इन हैंड इट्स द डेबिट बैलेंस. सो आई राइट हियर January 1st टू बैलेंस BD बिकॉज पिछली साल का अपन ब्रॉक कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इस साल में. सो इट्स 8,000 रुपीज एंड वी हैव बैंक में अपने पास 25,000 रुपए हैं. सो 25,000. नाउ इन्वेंट्री ऑफ गुड्स 20,000. आई हैव इन्वेंट्री ऑफ रुपीज. सो टू बैलेंस BD 20,000 rupees. Now I have building rupees 10,000. So January 1st to balance BD rupees 10,000. Next we have trade receivables from Vijay and Madhu 2,000 each. So now January 1st to balance BD 2,000 rupees and Madhu January 1st to balance BD 2,000 rupees. Madhu and Vijay are debtors. Now trade payables है Anand and Kapil. 5,000 Anand and Kapil 7,000. Now Anand January 1st by balance BD 5,000 rupees and we have Kapil by balance
BD 7,000. Now we have capital of 55,000. So कैपिटल का भी नेचर क्रेडिट होता है. So by balance BD 55,000. Now record transactions. Purchased goods worth 5,000 for cash less 20% trade discount and 5% cash discount. So इसको अपन समझेंगे वर्किंग नोट के साथ. So first working note 1, calculation of amount of purchase after discounts. So we have purchase amount, let's create a statement here. Then first I write particular amount. So I purchase goods amount 5,000. I less trade discount. How much? 20% of rupees 5,000. So it will be 1,000 rupees and it's 4,000. Now I less cash discount at 5% of what? Of 4,000. We have 200. Now our net purchase amount is 3,800 rupees. And now record this in purchase account separately because अपन purchase goods करते हैं तो we create separate accounts. So now purchase account debit credit. Let's create a ledger. It's not necessary to every time to have a separate column for general folio. If it's given in the question, you can write it, but it is not given in the question, so I'm not creating it. So date, particular amount, date, particular amount. So I purchased goods January 1st to bank 3,800, but I receive 200 as discount. So 2 cash discount 200. So I create another account here to record cash discount. So receive discount received. So now copy. Next time I will copy the format. So each time we don't have to create another. So discount receive account, receive account, debit credit. Now we receive because we are not recording trade discount क्योंकि अपन trade discount books of accounts में record नहीं करते. Cash discount we record in books of account, but we don't record trade discount in accounts books. So I hope you watch the previous lecture for it. Date,
particular amount, date, particular amount. So we receive discount. Discount receive is income for us. So I write it in credit side to purchase account, because एक जिस चीज का अपन लेजर बना रहे हैं उस चीज का ही नाम अपन उसके लेजर में नहीं लिख सकते. So 200 rupees. This transaction completed. अपन ने इसमें वर्किंग नोट बनाया और सेपरेटली 2 अकाउंट्स बनाया अपन ने. लेकिन अपन यहाँ भूल गए कि अपन ने कैश पे किया उसे. सो जनवरी 1st टू परचेज हाउ मच 3800 rupees. The next transaction received 1980 from Vijay and allowed him 20 as a discount. So on January 4th we receive cash from Vijay. So we receive की एंट्री अपन डेबिट साइड करते हैं. January 4th to Vijay amount 1980. Correct here, it's Y. So now come to Vijay. विजय का अपन को राउंड ऑफ करना है. सो विजय का अभी अपने पास डेटा है. विजय उसका 2000 रुपये उससे लेना बाकी है, तो तब वो देगा, अपन उसको लेस करेंगे. सो जनवरी 4th टू कैश अकाउंट we give discount to him. So to discount allowed account. Cash discount, we receive cash of 1920 rupees, we give discount to him. So now we close this account 2000. एंड विजय का कॉलम हो गया. अपन रिकॉर्ड कर ली, अपन ने कैश रिकॉर्ड कर लिया. ये मैंने कैश अपने पास आया, वो डेबिट हो गया, एक एसेट बढ़ गया. लेकिन जो दूसरा एसेट कम होना है उसको बराबर रखने के लिए अपन ने विजय के अकाउंट में जो 2000 रुपये डेबिट थे उसको 2000 रिसीव हो गए अपने पास 1980. सो अपन ने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करा एंड 20 रुपीज वी डिस्काउंट, अपन ने डिस्काउंट दिया. सो नाउ वी रिकॉर्ड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट. वी क्रिएट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डेबिट क्रेडिट. So here is our column. Date, particular amount, date, particular amount. We receive discount allowed. Discount allowed is a type of loss we have. 20 रुपए का अपन को लॉस मिला. So January 4th to Vijay 20 rupees. Now next transaction. Purchase plant from Mukesh for 5000 rupees and paid 100 as a cartage for bringing the plant to the factory and another 200 as a installation charges. Now plant account. We have to create another plant account. So now we have plant account. Now और एक अपने पास एक प्लांट का अकाउंट बनेगा और एक अपने पास मुकेश का बनेगा. So date, particular amount,
date particular amount. प्लांट आया अपने पास जनवरी. If date given, always remember to write date. January 8 to Mukesh 5,000. Now Mukesh account. So now copy this after date particular amount, date particular amount, debit, credit. Now copy this, copy it. Now Mukesh is creditor for us, so we write here January 8 by plant 5,000 rupees. लेकिन जो अपन ने प्लांट परचेज करे उसमें अपन ने एडिशनल चार्जेस दिए, लाइक 100 एज अ कार्टेज एंड 200 एज अ इंस्टॉलेशन चार्जेस. अकाउंट का कॉन्सेप्ट है कि अगर एक मशीनरी मैंने सेलर से गुड्स परचेज करे ₹10,000 और परचेज किए मैंने, लेट्स से सेलर है बेंगलोर में और गुड्स मैंने परचेज करे हैदराबाद में. सो गुड्स 10,000 के वैल्यू है गुड्स की, लेकिन इस पे मेरे को ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पड़ेगा. ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दिया, लेट्स से 500 rupees, and now its value is 10,500. और हैदराबाद तक वो ट्रांसपोर्टेशन से आते आते उसकी वैल्यू इतनी थी, लेकिन अब ट्रांसपोर्ट से उतारने के लिए कुछ एडिशनल चार्जेस लगते हैं, सो वो लग गए 100 rupees. तो ये भी मेरे गुड्स में ऐड होंगे. जो एडिशनल चार्जेस फ्रॉम द सेलर टू द परचेसर, जो भी एडिशनल चार्जेस गुड्स के लिए ऐड होंगे, जो भी अपन पे करेंगे वो अकाउंट्स में ऐड होता है. सो यहाँ पे भी वही हुआ है. 5,000 रुपए की मशीनरी तो है, लेकिन उसमें 300 रुपए हमने एडिशनल पे किया है. फॉर व्हाट? फॉर चार्जेस, फॉर टू कार्टेज, 100 to installation. In this case we have cartage and installation charge. जब तक अपन ने इसमें हुआ है प्लांट अपन ने परचेज किया, जब तक वो रेडी टू यूज नहीं होता, जब तक जो भी कॉस्ट उस पर इनकर होगी वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगी. So now we pay it cartage installation. So we had paid January 8 by cartage by installation charges. Cartage we pay 100 and installation we pay 200. And now purchased हो गया ये. This done. Now sold goods to Rahim on credit. So now we have to create another account, sales account. We had copied a format.
paste here. Yeah, paste. We have now another paste. It's our sales account. Sales account. And this is our how much we sold goods to Rahim on credit. So first we record 600 at name of Rahim. January we record it after watching it. Why? Rahim 600. Now we have Rahim डेटर ऐसा गुड्स सोल्ड किए तो वो अपना रहीम अपना डेटर है. सो जनवरी टू सेल्स अकाउंट 600. Now second, Rahim became insolvent and could pay only 50 पैसा in a rupee. रहीम इंसॉल्वेंट हो गया मतलब आई कैन से कंगाल हो गया. उसके पास पैसे नहीं है देने. वो सिर्फ अब पैसे देगा तो उसके पास है ओनली 50 पैसा इन अ रूपी. मतलब लेट्स मेक अनदर वर्किंग नोट. वर्किंग नोट 2. कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट received from रहीम. रहीम को अपन ने गुड्स सोल्ड किए. अमाउंट सोल्ड गुड्स 600 rupees. He only pay 50 पैसा in a rupee. मतलब अगर अपन ने उसे 600 रुपये का गुड्स सोल्ड किए और लेकिन वो अब सिर्फ 50 पैसे दे सकता है तो अपन सिर्फ उससे 300 रुपये वसूल कर पाएंगे. और 300 रुपये जो अपने बच जाएंगे वो अपने बैड डेट्स हो जाएंगे. अंडरस्टैंड? बैड डेट्स मतलब कि ये पैसा अब रिकवर होने के चांसेस नहीं है. हो सकते हैं लेकिन चांसेस अभी बिल्कुल नहीं है क्योंकि रहीम बैंकरप्ट हो गया. अगर वो चाहे कुछ काम धंधा करके चाहे तो ये जो 300 रुपये उसके हैं वो पे कर सकता है. लेकिन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये बैड डेट्स हैं. अब ये रिकवर नहीं होंगे. बैड डेट्स एक अपने लिए लॉस है. सो पेज another page and to sales. So I write buy cash how much 300 and buy bad dates account 300. So we close account 600. Now create another account for bad dates. Bad dates account. So it's a bad debt is a loss for us. So we record it in debit side. So January to Rahim 300 rupees. So we had done this and now Rahim became insolvent. This done. Sold goods to Ram for cash. In accounts and ledger we only record if we purchase goods from cash. Let's look up here. Okay. Sold goods to Ram for cash 1000 rupees. Okay. So record here January 18 to Ram 1000 rupees.
Let another ram it's a cash transaction, and we not record it by name. We record it only in the books of accounts in sales column. So January 18 by Ram, 1000 rupees. So our question is completed here. Now we close all the balances. Now we have 8,000 plus 1980 plus 1000 minus 3800 minus 300 rupees. So we have by balance CD 6880. Now we close this. So our 10,980. So there is no bank transaction, so we record it exact as same. So now inventory क्लोज करना है अपन को बाय बैलेंस CD 20,000 ये क्लोज हुआ. बिल्डिंग अपना बाय बैलेंस CD 10,000. तो ये अकाउंट भी अपना क्लोज हुआ. ये इम्पोर्टेंट है कि हर लेजर अकाउंट को बंद करना, क्लोज करना ज़रूरी है. सो मधु एज इट इज है बाय बैलेंस CD 2000. ये अकाउंट बंद हुआ. एग्जैक्ट है टू बैलेंस CD 5,000 रुपीज. ये अकाउंट भी क्लोज हुआ. अकाउंट्स में ये डबल लाइन जो अपन यहाँ पे बनाते हैं, मतलब ये टोटल है, पूरे कॉलम का टोटल है. तो कपिल भी अपना बंद हुआ टू बैलेंस CD 7,000 रुपीज. 7,000 रुपीज. ये अपना अकाउंट बंद हुआ. कैपिटल भी सेम टू बैलेंस CD 55,000. कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हुआ अपना 55,000. एंड परचेज अकाउंट बाय बैलेंस CD 4,000. परचेज अकाउंट भी अपना क्लोज हुआ. नो डिस्काउंट रिसीव. ये PNL में अपन ट्रांसफर कर देते हैं टू PNL अकाउंट 200. ये अपना क्लोज हुआ. ये भी अपना PNL में ट्रांसफर कर देते हैं अपन बाय PNL अकाउंट 20 rupees. So this also closed. Now we have plant account. So by balance CD 300. ये अकाउंट भी अपना क्लोज हुआ.
Now we have Mukesh to balance CD. We have Mukesh of 5000 rupees. ये account भी बंद हुआ. Now sales to balance CD. 1600. 1600. Rahim already closed. Bad dates by balance. It's transferred to PNL account. 300 rupees. So now we have done this question. In the next we practice more about. If you have any doubt in this question, comment below. I try to solve your query and try at once so you can clear your all concept here. And if I made some mistake, point out to me. I try to improve it. And okay, this is for today. Thank you for watching. Have a nice day.